Okay, chalo. Good morning. So we are going to take doubt clearing session, CBSE 10. So the first question already, yes, Bhagyashree. Okay, the screen is visible. Yeah. This question case study. The marathon is a long distance foot race with a distance of 42.195 kilometer, usually run as a road race, but the distance can be covered by the trail routes. The marathon can be completed by running or with a walk-run strategy. The marathon is one of the original modern Olympic Games in 1896. Okay. So Neha, a student of class 10, wished to participate in a marathon. She decided to begin a practice by gradually increase her running distance. In the first week, she decided to run 3 kilometers each day. Okay. Increase the distance by 2 kilometer each week. Okay. First day 3 kilometer tha, and after each week 2 kilometer, means first week में 3 kilometer hai, second week that one is of 5 kilometer. Sorry, first again the first day that one is a 3 kilometer, and then in that week 2 kilometer उसने increase किया, that is a 5 kilometer. Second week she would run 5 kilometer each day. Third week में 2 increase होगा, that is 7. So based on above information, answer the following. Okay. So तुम लोग भी बात कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं बात करूंगा. You can. So we'll start with okay. So here the first week A, that is of 3 kilometer, and the difference that one is of 2 kilometer. Correct? Yes, sir. Okay. So distance covered in each week. PO हर एक वीक में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो we will write distance covered in each week. हर एक वीक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? दैट वन इज अ 3 + 2 and -1. Why this 2? 2 that one is the difference. Each week में वो 2 कर रही है. Correct? So distance covered in n weeks. पता नहीं कितने भी वीक्स है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा, दैट वी नो. इसको हम लोग an बोलते हैं. an इज इक्वल टू 3 + 2 n -1. जनरली फॉर्मूला क्या है हमारे पास? We have the formula, that is a plus n minus 1 and d. ये d और ये 2 सेम है ना, the difference is 2 only. ओके. सो ये तो फॉर्मूला था आपका, तो हमारा फॉर्मूला बन चुका है. करेक्ट. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस विल नेहा कवर ईच डे ऑफ द 8th वीक? कौन सा वीक में? 8th वीक. 8th वीक के लिए क्या करेंगे हम लोग? दिस इज 8, 3 + 2, this is so 3 + 2, and this is 7. So 3 plus that become 14. कितना किलोमीटर ट्रेवल किया उसने? 17 kilometers in 8th week. Understood? Yes, sir. Okay. Then the next question, in which week she would be able to run for 45 kilometer each day? उसको कितना किलोमीटर जाना है? 45 किलोमीटर जाना है. So कौन सा नंबर का वीक होगा? Means again here an is equal to 45 kilometer. Okay, so formula is an is equal to, हमने formula क्या बनाया है? 3 + 2 n -1. So value of n, this is 45, 3, this 2 as it is, n -1. We have to find n means number of week. So 3 shift that side, it become minus 45 minus 3 is equal to 2 n -1. 45 minus 3. 45 minus 3. I think so. My internet is okay. Now it is stable. 45 minus 3 become 42. 2 goes downside. N -1.
1s are 21s are. So 21 this is equal to, here equal to sign is there, is equal to n minus. Because of internet connectivity, everything that one is vanished now. Now screen is visible. Yes, sir. Okay, the first one you got the answer. Na second one we will do again. हाँ Bhagyashree, first one understood na? Sir. Okay, so in which week she able to run 45 kilometer means AN, that one is of 45 kilometer. So we have formula AN is equal to 3 plus 2 and n minus 1. Na? This one is of 45 is equal to 3 plus 2 n minus 1. First we have to shift this 3 that side. 45 minus 3 is equal to 2 n minus 1. And wait. Okay. And then it become 42. 2 multiply with n minus 1. This 2. This 2 is multiply with n minus 1. So whenever we shift, it divides. 2 is equal to n minus 1. This become 21. Then 21, 1 shift that side plus 1 is equal to n. So n is equal to 22. So the second one, that is in which week? So in 22nd week, she able to run 45 kilometers. Okay, understood? Okay. Now the next question is little bit tricky. Pay attention properly. इतना easy नहीं है वो. So what is the total distance covered by Neha in 11 weeks if she practice for 5 days in each week? 11 वीक में उसने कितना डिस्टेंस को कवर करेगी अगर वो 5 डेज पर वीक करे? तो सबसे पहले हम लोग ना 11 वीक का उसका डिस्टेंस निकालते हैं. सो वी हैव फॉर्मूला AN इज इक्वल टू 3 plus 2 n minus 1. So just find 11 is equal to 3 plus 2, 11 minus 1. So 3 plus 2 and that become 10. So 3 plus 20. So these become 23 kilometers. So 11th week में वो 23 kilometers गई है. But now the total distance covered in 11 week ना. So total distance covered in 11 week if she practice 5 days per week. Okay, so is equal to, we have to multiply this 23 into 5 because 5 day कर रही है और ऐसे कितने वीक किया उसने 11. So we will get the total distance. Now 5 3s are 15, 1 carry, 5 2s are 10 and 1 into then 11. Then 11 5s are 55, 5 carry, 11 1s are 11 and 5 16, 1 carry, 11 1s are 11 5. So total distance she covered in 11 weeks if she run for 5 days per week is 1265 kilometer. Got? समझ में आया? हाँ. ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था. And the last question is, had she increased the distance by 3 kilometer, यानी जो पहले डिफरेंस 2 किलोमीटर का था अभी वो 3 किलोमीटर का हो गया. How many weeks would she have trained herself to run 45 kilometers? Now, अब डिस्टेंस
डिफरेंस चेंज हो गया, दैट वन इज ऑफ 3 किलोमीटर। उसको कितना जाना है? 42 किलोमीटर जाना है। एन दैट इज ऑफ 42 किलोमीटर। एंड द फर्स्ट डे दैट वन इज द सेम ऑफ 3 किलोमीटर। तो उसको कितना वीक खुद को ट्रेन करना पड़ेगा? दैट वन इज अगेन वी नो दैट ए इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। सो वी हैव फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एंड डी। सो 42 किलोमीटर है, दिस इज 3 प्लस एन माइनस वन एंड 3। यहाँ पे जो 2 था ना फर्स्ट में, दिस 2, यहाँ पे 2 था डिफरेंस, नाउ द डिफरेंस बिकम 3। So first shift is 3 here, 42 minus 3 is equal to n minus 1 and this become 3. So this become 39 divided by 3, n minus 1. 3 ones are 3 threes are, that become 13. One shift that side become plus. So n become 14. तो उसको कितने वीक में जाएगी वो? 14 वीक। 14 वीक में वो टोटल डिस्टेंस 45 किलोमीटर का ट्रेवल करेगी इफ शी इंक्रीज 1 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर पर डे, पर वीक, सॉरी। गॉट इट? Okay, sir. If you want, take a screenshot. आर्या पहिले भाग्यश्रीचे क्वेश्चन घेऊया, मग तुझे घेऊया. ओके? हाँ. तो हो गया, वो भी क्वेश्चन हो गए सब सॉल्व मेरे. प्रीति, आर्या एंड देशना इज देयर, आई थिंक सो. देशना, आर यू देयर? चली गई रे. कौन था वो? पिंकी जैन यानी देशना ही होगी, आई थिंक सो. देखना चाहिए सर. ठीक है. कैन आई रब दिस वन? हाँ. ओके. So if necessary, then only I will solve each and every part. Otherwise, I will just explain you. Okay? ओके सर. Okay, again, this is a case study based question. Again, a drone is usually used by the military for surveillance purpose. These days, drones are also used by the individual entrepreneurs, MSMEs, and the large companies to accomplish various other tasks. ठीक है, वो ड्रोन है, खत्म हो गई बात. तो ड्रोन इज फ्लाइंग एट अ रेक्टेंगुलर फील्ड में जा रहा है ड्रोन. ओके, सो वी हैव, आ गया रेक्टेंगल, यस. सो द ड्रोन दैट वन इज अ फ्लाइंग इन अ रेक्टेंगुलर लाइक दिस. ये वो कवर कर रहा है. ओके, एंड द फ्लाइंग द अ ड्रोन इज फ्लाइंग ओवर अ रेक्टेंगुलर फील्ड. ये फील्ड के ऊपर फ्लाई हो रहा है. द वर्टाइसिस ऑफ ए दैट वन इज अ -100, 0. बी that one is 100 and 0. C, that one is 100 and 150. And D, this one is a -100 and 150. Okay. A drone captured the image at a location XY. उसने कोई तो एक लोकेशन कैप्चर किया यहाँ पे, मे बी दैट वन इज XY. Based on the above information, answer the following. Find the dimensions of the rectangular field. What do you mean by dimensions? Dimensions of rectangular field means what? Dimensions means we have to find length and breadth. So dimensions, first we have to find AB. How to find AB? Then by distance formula. This AB is equal to under root x2 minus x1 whole bracket square plus y2 minus y1 whole bracket square. Vagesh, you understood? हाँ. And then
Diameter, second one BC. So AB, this one is the length, and then BC, that one is the higher. That one is the breadth. Again, with the help of distance formula, you have to find dimension, means you have to find length and breadth. Got it? Then find the distance between AC. Again, same by distance formula, distance between AC. Okay? Sir. Third one, third part is if the drone capture the image of object PXY. PXY. Okay. And search that the distance, find a relationship between X and Y if PA is equal to PC. Any idea what to do? क्या करना है, किसी को कुछ idea? First, you have to find the distance between PA. PA is equal to, that is x2 minus x1 whole bracket square plus y2 minus y1 whole bracket square. Now we have A. PA ना, A के coordinates को हम लोग x2 लेते हैं. So that one is a minus 100. And P के coordinates का x है, minus x whole bracket square. And the y2, that one is a 0. 0 minus y whole bracket square. So here we have to use the identity of minus 100 minus x whole bracket square, means we have to use the identity of plus, positive. So that one is a 10,000 plus 100x plus x square plus y square. So just squaring both the sides. So PA square, then root sign cancel. 10,000 plus 200x plus x square plus y square. Okay. Similarly, same PB also. PB is equal to same. No, we have to find PC now. It will be PC, right? Yeah. It is a PC. X2 minus x1 whole bracket square plus y2 minus y1 whole bracket square. So वाला पेपर सॉल्व करेगा हम स्टैंडर्ड है हमें स्टैंडर्ड है ओ इसमें कोई स्टैंडर्ड है ओ मैथ्स में 2 पेपर होने वाले हैं इसी का स्टैंडर्ड Deshna, just mute yourself. Okay. So x2, that one is again 100 minus x whole bracket square. And again this C, that is a 150 minus y whole bracket square. Okay. So 100, that one is 10,000. Now minus identity, minus 200x plus x square. Here again A minus B's identity is square of 15, that is 225. 2 zeros minus 300y plus y square. Okay. Then again we have to do PC square is equal to 10,000 and 22,500 become 32,500 minus 200x minus 300y plus x square plus y square. Okay. Yes, sir. Wait, not completed. Baki और I'm searching some place. कहाँ पे मैं करूँ? If I, okay. So I will do this side only. Yeah? I'm going to rub this one. Okay, sir. So now we know that PA is equal to PC. PA is equal to PC. This is given.
So therefore, PA square is equal to PC square. That is squaring both the sides. Okay. So value of PA square, that is of 10,000 plus 200x plus x square plus y square. And value of PC square, that is 32,500 minus 200x plus 300y plus x square plus y square. Equal to sign is there and both sides x square and y square are there. So x square, y square and x square, y square from both the side cancelled. Okay. Then, sorry, we have minus 300y. Minus 300. So minus 200, minus 300, we will shift another side. So this side already 200x is there. So 200 come this side, become again plus 200x plus 300y. And right hand side already we have 32,500 and then 10,000 we will shift it minus, let's subtract from here. So these become 400x plus 300y and we subtract it become 22,500. Divide the whole equation by 100, then it become 4x plus 3y is equal to 225. So the question was find the relationship between x and y. So this is the relation between x and y. Okay. Okay, Now the next part sir. is same, only you have to solve this one. A drone capture the image of object at point Q whose x coordinate is 0. Whose x coordinate is 0 means y coordinate is y. So Q point is there. Whose x coordinate is 0 and y coordinate we don't know. Okay. And which is equidistance from A and D. So it is equidistance from A and D. So QA and QB, QA is equal to QD. And we have to find coordinates of Q, means again we have to find Y. It is same like this, Bhagyeshri. First you have to find, like the PA, you have to find QA. Then like PC, you have to find QD. Again you have to square, again you have to show equal. You will get the value of Y. Understood? Yes, sir. If you want, take screenshot. Can I rub this one? Yes, sir. Riti, Arya, Deshna, are you there? Yes, sir. Okay, ठीक. Yes, sir. मालूम पड़ा कि ठीक. Okay, the next question. Okay, the next question is Tara scored 40 marks in a test. Okay, and getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for the wrong answer. This is the first condition. The second condition is this is the second condition, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks has been deducted for the wrong answer, then Tara would have scored 50 marks. This is the second condition. Assuming that Tara attempt all the question, find the total number of questions. This is of simultaneous equation.
तो हम लोग क्या करेंगे, लेट तारा gives X correct answer and Y, that one is a wrong answer. Yes, Bhagyashri. So whatever the correct answer, suppose उसने 3 correct answer दिए हैं, तो correct answer को कितने marks मिल रहे हैं? 3. So 3 into 3, that become 9. So we have to multiply number of question and number of marks. So first condition, 3 for the each right answer. So we have to write 3x. और रॉन्ग आंसर कितने 1 मार्क्स लूज हो रहा है, तो लूज हो रहा है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -1 y मीन्स यू हैव टू राइट ओनली y. तो राइट आंसर माइनस रॉन्ग आंसर, सो शी विल गेट 40 मार्क्स. दिस इज द वन कंडीशन नंबर 1. अंडरस्टूड? हाँ. Then again 4 marks awarded for each correct answer. 4 marks means again 4x. And deducted 2 marks deduct for the wrong answer means -2y. And she will get 50 marks now. Now I think so you know how to solve this equation. Yes, sir. Okay, na? So just take a screenshot. We will solve next one. Done, sir. Okay. Now the next question is from the height and distance trigonometry. Question number 34. Interesting question. This. A man on the top of a vertical tower observes the car is moving at a uniform speed coming directly toward it. If it takes 12 minutes from the change the angle of depression, 12 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 45 degree, how soon after this the car is reached to the tower? So yesterday I solved this question. ICSE में भी same question आया था. Values are different. Okay, so man, this one is the supposed observation tower. Okay, and the car, that one is a moving toward it. तो इसके तरफ आ रही है कार. And the angle of depression, then we have to draw again a parallel line for this. अगर याद होगा हम लोग ने डिस्कस किया. So first the position of the car. If 30 degree means that car is away from the tower, and if it comes at the 45 degree, then it is near to the tower. Okay, जितनी कोई भी ऑब्जेक्ट पास में आती है उसका एंगल इंक्रीज होता है, फिजिक्स में था हमें. So first he observed this is of 30 degree, and after some time he observed after 12 minutes the position of the car is changed. Now our work starts. So first this angle of depression is 30 degree. After some time the angle changed to 45 degree. Just give labeling A, B, this one is a C, this is G, this one is a E. Okay. Again the question is for the 5 marks. So properly हर एक चीज mention करो, and after 12 minutes ना, so this timing from C to D, these become the 12 minutes. ये 12 minutes लगे, and we have to find B तक आते आते उसे कितना टाइम लगेगा, means from C to B कितना टाइम उसे लगेगा. We don't know कि कितना, बाकी रिमेनिंग कुछ नहीं दिया है हमें. Okay, so we'll do now. Just first write let AB be the observation tower. Who is that? Deshna, just mute yourself, no? AB, that is observation tower. Then we have to write draw A parallel to BD. This we draw. Then we have to use that alternate angle concept, angle EAD.
EAD is equal to ADB. This is of 45 degree. Now this 45, then this one also 45. Then the next one, Sir, angle ADB would be 30 degree. sorry, 30 degree, correct. Yes. भाग्यश्री एकदम alert mode पे. EAD and AD, good. So this one is of 30 degree. And the next one, angle EAC is equal to angle ACB. This one is of 45 degree. See, both these are the alternate angles. Just write properly in exam. अभी हमारे पास टाइम भी कम है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने, ठीक है. So again read the question. A man on the top of the vertical tower observe the car is moving with the uniform speed. अब हमारे पास स्पीड नहीं है, so हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, just we will write let uniform speed be, क्या था उसका, कितना टाइम लग रहा है, मिनट्स लग रहा है ना, तो वी विल राइट जस्ट मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड, ये उसका स्पीड है. एंड फ्रॉम सी टू डी देने के लिए कितना टाइम लगा, 12 मिनट्स. सो वी हैव द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो जस्ट राइट डिस्टेंस बिटवीन सी डी का डिस्टेंस कितना है, दैट वन इज द स्पीड इनटू टाइम. Speed is x, time is 12. So that one is a 12x meter. कितना आया, 12x मीटर डिस्टेंस है CD. x मीटर. ओके, यहां तक समझ में आया एवरीवन? Yes, ओके, sir. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देन जस्ट टेक वन ट्रायंगल. जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, ईट एलिफेंट इन पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े करो और खाओ. पिज्जा एक साथ नहीं खा सकते, वैसे सम भी एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते. सो वी विल डू फर्स्ट ABC. दिस इज ऑफ 45 डिग्री ना. सो वी वांट दिस BC, हमें BC चाहिए, AB चाहिए, वी डोंट वांट हाइपोटेनियस. सो हमें हाइपोटेनियस नहीं चाहिए, तो वी हैव टू यूज tan. सो इन ट्रायंगल ABC, tan 45, tan is equal to perpendicular side upon base, means opposite side upon base. That one is a AB upon BC. We know the tan 45 is 1. So AB upon BC. So whenever we shift that side, then it becomes BC is equal to AB. Okay. Now we know that BC and AB are equal. Now take the bigger triangle. I want a value of tan 30. A, B और यहाँ पे है D. This is 30 degree. We want, here again we use tan in triangle ABD. Tan 30 is equal to AB upon BD. What is the value of tan 30? Value of tan 30. मुझे नहीं आ रहा है, तुम लोग को बताना है. यस, आर्या, धृति, भाग्यश्री. Value of tan 30. 1/√3. 1/√3.
सबने चेक किया, लर्न किसी को नहीं था। नहीं सो सर, मैं सॉल्व करी। ओके, नहीं सर, बुक नहीं है इधर। tan tan 30 in the place of tan 30 just write 1 by root 3. Okay, AB is as it is and BD again as it is. Okay, just cross multiply. So this become, क्या होगा ये? If we multiply it become BD is equal to root 3 AB. Okay, got it? यहां तक समझ में आया? So सर ये we know that the value of AB is BC. यहाँ पे लिखा था हम लोग ने 1 number. AB is equal to BC. So in the place of AB just write BC and write from 1. And if you observe the main diagram, जो original diagram देखोगे उसमें BD है, तो BD is divided into two part, BC plus CD, correct? So in the place of this we can write BC plus CD. Okay, so just shift BC one side. So CD is equal to root 3 BC minus BC. Okay, so we have to find CD. CD की वैल्यू क्या है हमारे पास? 12x है ना? And if you take BC common, then this become root 3 minus 1. Okay, so shift this root this side. So 12x upon root 3 minus 1 is equal to BC. अब ये क्या हो गया? BC, this become the distance, correct? ये distance हो गया. So we can write BC is equal to 12x upon root 3 minus 1 meter. We have to find time ना, हमें टाइम फाइंड आउट करना है. तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? If you make the time formula of time is equal to distance upon speed ना. So time required to reach foot of tower, तो क्या आएगा? 12x upon root 3 minus 1 divide by, I will write divide like this, divide by the speed, and already we mentioned that uniform speed is x kilometer per hour, तो x हो गया. Take the reciprocal 12x upon root 3 minus 1 into 1 by x. Now this x cancel. So we have now, अब कहाँ करूँ? Okay, I have very less space here. कुछ जुगाड़ करता हूं मैं अभी. गलती हो गई, अलग पेज पे लेना चाहिए था. ओके, so I will take now time here upside. 12 upon root 3. It is visible. We have the value of root 3. दिख रहा है ना? हाँ सर. ओके, तो वेट, I will do something. कुछ करता हूं मैं. जस्ट अ मिनट, कुछ जुगाड़ कर ले. Okay, so I will solve here. So we have to write time required, that is 12 upon root 3 minus 1. So if we substitute the value of root 3 here ना, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा मालूम है क्या? 12 upon 1.732 minus 1. So this 12 upon 0.732
नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको डिवाइड करने के लिए ना। तो हम लोग एक आइडिया करते हैं, वी विल डू द रैशनलाइज डिनोम और विल डू द रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड आफ्टरवर्ड वी विल सॉल्व। विल डू द रैशनलाइज डिनोमिनेटर और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट बिकम वेरी इजी। तो हम लोग ने क्या लिखा था अभी, टाइम इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 12 अपॉन √3 minus 1. If we multiply this is √3 plus 1 upon √3 plus 1, then it become very easy. So numerator directly I will write 12 √3 plus 1 and denominator you will get √3 ka square 3 minus 1. Then you will get 12 under √3 plus 1, denominator contain 2, 2 ones are 6. Now you have 6. Value of √3 given already 1.73 plus 1. Then 6. It become 2.73. Multiply 3. 6 3s are 18. 1 carry. 6 7s are 42 and 1 43. 4 carry. 6 12 16. So it requires 16.38 seconds to reach at the foot of the tower. Sum solved. Got it? Yes, sir. Arya, Dhriti. बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। मैडम can I rub this one? Yes, sir. Okay. I think so. This one is the last. One more. एक और है। सर और दो है। मेरे को एक ही दिखा है। ठीक है करते हैं। अभी तो आर्या के बहुत सारे डाउट्स बहुत है लेकिन अच्छे हैं, सिंपल हो जाएंगे फटाफट। थोड़ा पेशेंसली बैठो बिकॉज कल से फिर मैं नहीं मिलूंगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक।
अब मुझे आइडिया आ गई कैसे करना है इसको. See the question. A ball is thrown in the air so that t seconds after it is thrown, the height is h meter above the starting point is given by the polynomial h is equal to, is given that height. With the help of this formula, we have to find height. Write down the zeros of the given polynomial. How to write zero? Wherever it intersect x-axis, there तो कितने zeros है? There are two zeros ना? Two zeros. That zeros are one wherever it intersect x-axis, that is 1 0, and the second wherever it intersect x-axis, that one is a 5. Okay, so these are the two zeros of this polynomial. First completed. Second one, find the maximum height achieved by the ball. Ball ने maximum कितनी height achieve की है? So we have to find, we have the formula. हाँ, so if you observe ये middle वाला है ना उसका, this is the maximum height where the ball reach. Okay, and the coordinates of this one is a 5/2, that is x. X coordinate is 5/2 and y coordinate is 0. Okay. Okay, so here students, if you observe this graph, this side height mentioned and on x-axis time mentioned. तो अगर इसका टाइम देखोगे तुम लोग, मैक्सिमम हाइट जाने के लिए इसे कितना टाइम लगता है? 5/2 एंड 0 मीन्स नॉट 0, वी हैव टू टेक 5/2. तो वी हैव द फॉर्मूला h is equal to 25t minus 5t square. So no need to take 0. 0 मिनट कैसे लगेंगे? We have to take 5/2. 25, this is 5/2 minus 5, again 5/2 whole bracket square. So 5 5 25 by 2, sorry 125/2 minus this 5 means 5 square means 25. 25 5 is 125. So these become 125 and the square of 2 become the 4. अब ये 4 हो गया. अब पता नहीं, do we have to do LCM? Multiply this 2 by 2. So these become 250 minus 125 and denominator में आया 4. So 250 upon 125, this is the 125. Divide by 4. 4 से divide करो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 carry, point दिया तो 1 means 10, 4 2 जा, फिर 2 बचा 5. So कितने हाइट तक जाएगा? 31.25 मीटर तक जाएगा. ओके भाग्यश्री? Yes, sir. Next part, after throwing upward, how much time did the ball to take to reach the height of 30 meter? We have the formula. हमारे पास फॉर्मूला है h is equal to 25t minus t square. So कितना मीटर गया हो? 30 मीटर. हाइट कितनी है? 30 is equal to 25t minus t square. Shift this value that side. So t square become plus, 25t become minus, 30 तो already plus था. Okay. Now we have this 30 के फैक्टर 25 आनी चाहिए. Wait, just a minute.
और डिस्टर्बेंस है, फॉरगेट टू रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग ने क्या दिखा था, 2 zeros। तो 2 zeros मीन्स वेर एवर इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट किया दैट वन इज 0, दैट इज 0 and 5। ओके, दैट इज 0 and 5। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा। तो इफ यू ऑब्जर्व, तो ये यहाँ पे टाइम दिया है, ऑन एक्स एक्सिस टाइम इज गिवन। तो मैक्सिमम हाइट कहां तक गया, 5/2 सेकेंड्स में गया है। सो अगेन वी हैव द फॉर्मूला ऑफ हाइट, इसमें हम लोग ने 5/2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड वी विल गेट आंसर। तो इन 5/2 सेकेंड इट रीच अप टू 31.25 मीटर। थर्ड पार्ट, थर्ड का ए, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड, ऊपर फेंकने के बाद 30 मीटर्स तक जाने के लिए बॉल को कितना टाइम लगेगा। बट द फॉर्मूला इज, मैंने फॉर्मूला शायद रॉन्ग लिखा। फॉर्मूला इज 25 and this become the 5t square minus 5t square. Now we have to shift all the values. 5t square minus 25t plus 30. Divide the whole equation by 5. So t square minus 5t plus 6. Now 6 के factor 5 चाहिए, 3 2 जा. So minus 2t minus 3t. See, minus minus plus multiply करते हैं तो, and minus 2 minus 3 become the 5, 6. Make the group. Take t common, t minus 2, and then become minus 3 common, t minus 2. If the both brackets are same, then all factors are correct. T minus 2 and then t minus 3 is equal to 0. So t minus 2 is equal to 0 or t minus 3 is equal to 0. So t is equal to 2 or t is equal to 3. So there are two answers for this one. Okay, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसको यही आंसर आएगा। And the next one is find how much, find two different values of t. यहाँ पे उसने क्लियर बोला है, दो डिफरेंट वैल्यू t की फाइंड आउट करो। The height of the ball was 20 मीटर। तो अगेन द सेम फॉर्मूला, h is equal to 25t minus 5t square। कितना हाइट में गया, 25 में, 20 minus 5t square। Shift again this side, 5t square minus 25t plus 20 is equal to 0. Divide by 5. So t square minus 5t plus 4. Now 4 के फैक्टर 5 चाहिए, तो 4 1 जा 4. t square minus 4t minus 1t plus 4. So make the group t common, t minus 4. यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 common, t minus 4. So this is the t minus 4 1 and then t minus 1, that is 2. So t minus 4 is equal to 0 or t minus 1 is equal to 0. So t is equal to 4 seconds or t is equal to 1 second. Sum solve. Okay, Oh, take the screenshot. क्या गड़बड़ हो गया। Okay, so the next question is, okay, which term of the progression, that is 20, 19th 1/4, 18th half, 17th 3/4 is the first negative term. So this is the first time ऐसे कोई क्वेश्चन हम लोग को आया है, अब के तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे।
So we'll do now. Screen is visible, na? Bhagyashree? Yes, sir. So the terms are this is first is 20. Then 19th one 4 means 19 for the 76 and 1 77 by 4. Madam कडे बोल नंतर बोलो. Then 18 and half means 36 and 37 by 2. Then 17 for the 68 and 371 by 4. Okay, and this is so on. So which term this progression is given और हमें find out करना है कि कौन सी first term negative है and हमें बाकी कुछ भी clue नहीं दिया है, but we have A that is 20. Okay. Then we have to find the difference. Difference is D. That is second term, that is 77 by 4 minus 20. Then we'll do LCM. तो 4 गया यहाँ पे 77, 420 था 80 divided by 4. So difference is minus 3 by 4. Difference is minus 3 by 4. So हमें term find out करनी है, that is AN. कौन सी term है? So and that should be negative. A plus n minus 1 and D. The value of A that is 20. We have to find that term n find out करना है. And D it should be minus 3 by 4 आया है. Now the question is which term is negative? तो नेगेटिव करना है तो मीन्स 0 इससे ग्रेटर है. Whatever this term that one is a less than 0, करेक्ट. तो an के जगह पे मैंने 0 लिखा, इक्वल टू की जगह पे लेस देन साइन रखी. क्यों साइन रखी? बिकॉज whatever जो आंसर हमारा आने वाला है दैट आंसर नेगेटिव आएगा. ओके, मीन्स n की वैल्यू जो भी आएगी दैट वन इज अ लेस देन 0. सो विल सॉल्व. पहले मल्टीप्लाई करते हैं. क्या कर सकते हैं पहले इसको? पहले 20 को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा. So that become minus 20. Okay, then n minus 1 and minus 3 by 4. फिर क्या करते हैं? 4 को शिफ्ट करते. दिस वन minus 3 by 4 is multiply that side, उसका रेसिप्रोकल होगा minus 20 into 4 upon minus 3. This one n minus 1. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो your answer will be minus 80 upon minus 3. That is n minus 1. Both minus numerator and denominator become plus. 80 divided by 3. N minus 1. So 1 shift that side. 80 divided by 3 plus 1. That is n. So do the LCM. 80. 3 goes upside plus 3 upon 3. That is n. So these become 83 divided by 3 less than 1. So do the LCM. 27 3 जा 81 होता है. तो 27 बैलेंस बचा 2, रिमाइंडर 2 and 3. मीन्स अप टू 27 टर्म ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव और उसके बाद वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएगी. सो देयरफॉर 28 टर्म ऑफ गिवन प्रोग्रेशन is negative. Sum solved. Understood? Yes, Okay, ठीक है. Take the screenshot. taken. Okay. We'll do next.
This one is a question again. The m term of an AP is 1 by n and n term is equal to 1 by m. Again, this comma is not there. Huh? Find the sum of its m n term. So already it is given that let A and D are the first term and common difference respectively. So already solution के first two steps are given, that is mth term is 1 by n, means again we have formula an is equal to a plus n minus 1 and d. It is given that m term is 1 by n. So in the place of n, just write m, a plus m minus 1 and d. So mth term is 1 by n is equal to a plus m minus n and then d. This is the first equation. Okay. Then similarly we can write its nth term is 1 by n. So mth term means Tn is equal to a plus n minus 1 and d. So this term is 1 by m is equal to a plus m minus 1 and d. ठीक है. अगेन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ इट्स एम्परसेंट. तो हम लोग को, अगर तुम लोगों को याद होगा, हम लोग ने प्रीवियस में कुछ किया था, तो इसको हम लोग ना थोड़ा शिफ्ट कर चेंज करते हैं. ऐसे ही सम किया था हम लोग ने थोड़ी देर पहले. एन को विल शिफ्ट एन दैट साइड. सो एन यहाँ पे आएगा, तो पहले करते हैं एन इज इक्वल टू ए प्लस एम डी माइनस डी. Then shift n that side and it will be multiply an plus mnd minus nd. Now this one is your first equation. Similarly, again क्या करना है, nth term is m, तो m को n से रिप्लेस करो, n को m से रिप्लेस करो. am mn is as it is, दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस किया, माइनस एम डी. सेम सम वी सॉल्व. अगेन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज 1 इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल. an is an plus m and d minus nd is equal to am plus m and d minus md. Again both the side m and d same, m and d cancel. So we have am को उधर लेते, am is equal to md, यहाँ पे माइनस है, nd उधर जाके प्लस होगा, nd माइनस md. टेक a कॉमन, n माइनस m. Here take d कॉमन, n माइनस m. अगेन वी विल कैंसल. सेम सम था जो प्रीवियस में हम लोग ने सॉल्व किया. सो देयरफॉर a is equal to d. This is equation number 3. Now what to do? हम क्या कर सकते हैं अभी? We have to put this value. Put a is equal to d in equation 1. Equation 1 में पुट अप करके d निकालते हैं. So equation 1 is 1 is equal to, in the place of a हमें d करना है, d n plus m and d minus nd. Now dn positive, dn negative, these both cancel. सेम समय याद आ रहा होगा तुम लोगों को. तो so 1 is equal to m and d. So 1 upon mn is equal to d. That is equation number 4. ठीक है. Now the question is, find the sum of first m n term. Sum. So s mn is equal to mn divided by 2. Then 2a plus n minus होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे mn minus 1 and this one is the d. Now substitute the value of a के जगह पे d put up करो. mn by 2 2d
just we can multiply this one. M and D minus, नहीं पहले value put up करते, then we will put up here. Mn minus 1 and then D. Now substitute value of D. Value of D is from fourth one, that is 1 upon Mn. 2 into 1 upon Mn plus this Mn minus 1 and D again 1 upon Mn. This is from fourth. So Mn divided by 2, 2 upon Mn. अब नहीं कैंसिल होगा, वेट पहले कैंसिल नहीं करना है, एंड देन अगेन इट इज मल्टीप्लाई Mn minus 1 upon Mn. Now denominator in the bracket that is same. तो पहले हम लोग करते 2 plus Mn minus 1 upon Mn. So now we can cancel this Mn. अब cancel होगा. So this Mn and this Mn cancel because denominator same आ गया, plus minus sign नहीं है. And then 1 upon 2. 2 minus 1 is 1 plus Mn. This one only we have to prove ना. Find the sum of first Mn. तो इसका sum है. This is the your answer. This is answer. Okay, got it? चलो take the screenshot. अभी फटाफट 20 minutes में wind up कर दें. Okay, I'm going to rub this one. Okay, the question is from the arithmetic progression. The sum of 4 consecutive terms is an AP is 32. The ratio of product of first and the last term. The ratio of the first and last term. Ratio of product of. Something is wrong. The ratio of the product of the first and last term is the product of two. Acha, is the product of two middle term is 17 by 15. Okay. So students, whenever ना AP में आएगा 3 consecutive terms, I think so मैंने आपको बताया नहीं बताया, I don't know. In this type of sums are asked, अगर बोला AP है and 3 consecutive terms, तो you have to take A minus D, A and A plus D only. If 3 terms, if 4 terms is A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. And if the 5 terms, A minus 2D, A minus D, A plus D and A plus 2D. This is the rule. If 3 terms are there, if 4 terms are there, if 5 terms are there, you have to take these numbers only. अगर आपके पास ये नहीं है तो take the screenshot. अब क्या बोला है? Let the 4 consecutive term numbers. So we will write let 4 consecutive numbers be. क्या लिखा है हम लोगों ने? A minus 3D 1, A minus D second, A plus D third and A plus 3D. Okay. The first condition is that sum of this term is 32. इसका sum 32 है. A minus 3D plus A minus D plus A plus D plus A plus 3D. इसका sum है 32. 32 आया, then 3D cancel, D cancel. So we have A 4A is equal to 32. 4 goes that side, it divide. 1 जा 8 जा, A की वैल्यू आ चुकी है 8. Now the next part is ratio of product of first and last number. यानी first and last को multiply करो, A minus 3D
and a plus 3d. इसका ratio and the ratio of middle two terms, ये दोनों का ratio, that is a minus d and a plus d. The ratio of this one is a 7/15. This is the condition. If you observe students carefully, numerator में a minus b, a plus b की identity है, a square minus b square. Then we can write a square minus 9d square. And denominator also a square minus d square is equal to 7/15. But we have value of a, that is 8. 8 square minus 9d square. And 8 square minus only d square is equal to 7/15. Okay. Then 8 square, that is 64 minus 9d square upon 64 minus d square is equal to 7/15. Now क्या करना है हमें? We can do cross multiplication. So 15, 64 minus 9d square, and this is 7, 64 minus d square. Now multiply 15 4s are 60, 6 carry. 15 6s are 90, 90 and 6 960. Minus 15 9s are 135 d square is equal to 7 4s are 28, 2 carry, 7 6s are 42 and 2 4 minus 7 d square. Okay, shift number one side and numerical value another side. So 960 minus 448 is equal to minus 7d square plus 135d square. Then 960 minus 448. So 10, this become 2, carry 1, this become 1, and this 5 and 2. और यहाँ से माइनस करेंगे 7 गया 5, 20, 128. 128d square. Now shift 128 that side, 1, 5 and 2 upon 128 d square. Okay. So अभी 2 से डिवाइड होगा, 128 के टेबल में जाता है क्या? पता नहीं हम लोग को. आई थिंक सो 128 4 होता है, चेक करते हैं. 128 into 4 कैसे पता चला मुझे? 8 4 32 होता है और यहाँ पे 2 है, तो 32 3 8 and 3 11 1 कैरी 5 आ गया. देखो, सो 1 और सेकेंड साइड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली डी स्क्वायर है, यानी जो भी नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर ही आना चाहिए. सो देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, taking square root. Okay, now we have a and we have d. अब हमें क्या करना है आर्या? हमें फाइंड आउट करना है ऑल द टर्म्स. कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी हैव द टर्म्स. तो फर्स्ट टर्म क्या थी? a minus 3d. Value of a is 8 minus 3 and d की वैल्यू आई 2. So 8 minus 6, that one is a 2. Second term, that one is a minus d. 8 minus 2, that is 6. Third term, that is a plus d. So you have to write this, सब लिखना है तुम लोगों को, 10. And then fourth term, that is a plus 3d. तो क्या होगा? a, that is 8 plus 3 or 2. तो 8 plus 6, that is 14. तो sum solved. Okay, take screenshot. Take screenshot everyone, fast. taken. Okay, chalo. Next. धृति भाग्यश्री है ना यहाँ पे? ओके. मैडम कौन आया था अभी यहाँ पे? कौन आया था अभी बुलाने? उनको घेऊन ठेवा आता ये, किसी का बर्थडे चॉकलेट देने बोला बाद में अभी. चलो. In an equilateral triangle, D is a point on BC such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that. मस्त क्वेश्चन है.
Okay, in a triangle ABC. ABC is an equilateral triangle बोले तो all sides are equal. And one side that D is a point on BC. तो यहाँ पे कहीं पे तो D है. So the points are this is A, this is B, this is C, this is D. Okay. So already we have AB is equal to BC is equal to CD. Q. All these are the sides of equilateral triangle. And then BD is equal to 1/3 of BC. This is given. Okay. And prove करना है BD is 1/3 of BC. BD is 1/3 of, sorry, 7AD square. 9AD square is equal to 7AB square. Now we have to do one construction. हमें एक construction करना है. कंस्ट्रक्शन करना है बिकॉज हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है इसमें. विल डू वन कंस्ट्रक्शन. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. जस्ट राइट ड्रॉ. इसको लेबलिंग करते ए बी सी डी. ए परपेंडिकुलर टू बी सी. This AE is perpendicular to BC. So students, in equilateral triangle whatever the perpendicular drawn वो perpendicular ही median भी होती है. So therefore BE is equal to half of BC. So in equilateral triangle median and altitude are वन एंड सेम. यानी जो मीडियन होती है वही एल्टीट्यूड होता है. यानी उसने भी उसको हाफ में डिवाइड किया. ओके. सो बीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी. ओके. और ऊपर भी आप लोग देख रहे हो बीसी है. तो ये 2 को शिफ्ट करो यहाँ पे. दिस बिकम 2 बीई इज इक्वल टू बीसी. ओके. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड ये गिवन लिखते हैं बी डी इज इक्वल टू 1/3 BC. दिस इज गिवन. तो 3 को वहां पे शिफ्ट करते. 3BD इज इक्वल टू BC. ओके. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. दोनों ने एक दूसरे को ये किया है. बोथ इफ यू सी द राइट हैंड साइड, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है. तो वी कैन कंपेयर. ये दोनों को हम लोग एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं. लेकिन जरूरत है कि BE BC है. ओके. एंड BD. बट वी वांट अ वैल्यू ऑफ DE की. हमें वैल्यू चाहिए DE. तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे BE इज इक्वल टू BD प्लस DE. करेक्ट. बिकॉज दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर. BDE. अब BD की वैल्यू कैसे निकाले? वी हैव वैल्यू ऑफ B दैट इज 1/2 BC. BD की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 1/3 BC. देन वी हैव टू फाइंड DE. तो दिस 1/2 BC मीन्स BC by 2. 1/3 BC, this is BC by 3 is equal to DE. Sorry, plus. Now shift this 1/3 that side. दूसरे साइड में उसको शिफ्ट करते हैं. तो BC by 2 minus BC by 3 is equal to DE. So do the LCM. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3BC minus 2BC upon 2 3 6. सो क्या होगा? 3BC minus 2BC that is BC only. तो BC upon 6 is equal to DE. ओके. सो 6 को वहां पे शिफ्ट किया तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 DE. सो वी कैन राइट दिस वन इज 3rd. ओके. अब क्या करना है? व्हाट वी वांट. हमें क्या क्या चाहिए? AD चाहिए दैट इज अ हाइपो ऑफ ADE. सेकेंड वी वांट AB दैट इज अ हाइपो ऑफ ABE. सो हमें ये 2 ट्राइंगल्स यूज करने हैं यहाँ पे. करेंगे मैडम?
सो वी हैव टू टेक, हमें एडी चाहिए ना, एडी को हम लोग बाद में लेते हैं, नहीं तो एडी को ही पहले ले लेते, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द ट्रायंगल इज this is A D E. So in triangle AED, angle E is equal to 90 degree. So AD square is equal to AE square plus DE का square by Pythagoras theorem. Correct? सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली ना, ए ना ये वाले ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल यूज करना है हमें वो भी मैं पहले ड्रॉ करके रखता हूँ, देन इट बिकम वेरी इजी, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा ही क्यों किया मैंने। सो आई एम गोइंग टू टेक अनदर ट्रायंगल दैट इज ए ई बी। क्यों लेना है? बिकॉज अगर तुम लोग देखोगे हमें एडी और ए बी प्रूव करना है, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैंने यही लिया। ओके अगर ऑब्जर्व करोगे दोनों में ए ना कॉमन है, ए एंड ए, और ए हमें कहीं पे भी नहीं चाहिए, वी डोंट वांट ए। तो हम लोग, मैं इसको क्या करूंगा, ए को ए पे रखता हूं, देन डेक ए डी, डी को शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। नाउ मैंने शिफ्ट कर दिया सिर्फ, एंड वी हैव वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखी है देखो, बीसी बाई 6, ए डी स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू है बीसी बाई 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। okay now we'll do here in triangle AEB, angle E is equal to 90 degree. Again this is AB square is equal to AE square plus BE square, again by Pythagoras theorem. Now AB हमें चाहिए ना, यहाँ पे AB को AB रखते हैं। ए की वैल्यू अभी देखी थी फोर्थ में, क्या थी, एडी स्क्वायर माइनस बीसी अपॉन 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यू हैव बी, बी की भी वैल्यू कहीं पे तो दी है, कहां पे बी की वैल्यू, दिस बी इज इक्वल टू हाफ बी सी ना, इसको 1 नंबर रखते हैं, बी इज इक्वल टू हाफ बी सी, सो जस्ट राइट बी सी बाई 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, दिस इज फ्रॉम, कहां से आया, फर्स्ट एंड फोर्थ, दोनों जगह से इसको हम लोगों ने लिया है, फर्स्ट एंड फोर्थ। नाउ जस्ट राइट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। नाउ जस्ट राइट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 9 इंटू दिस 9 बी सी स्क्वायर अपॉन 36। नाउ दिस टू आर इक्वल, डिनोमिनेटर सेम है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर एक प्लस बी सी स्क्वायर माइनस है और 9 बी सी स्क्वायर प्लस है, 9 में से 1 गया बचा 8, तो प्लस 8 बी सी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में है 36। अब 4 के टेबल में दोनों आता है ना, तो 4 2 जा 4 9 जा, ठीक है। तो अभी 9 से इसको मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे, वी विल डू एलसीएम, क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई किया 9 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर अपॉन 9, ये 9 को शिफ्ट किया यहाँ पे, 9 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, वी वांट ए डी एंड ए बी ओनली, तो ए बी 7 चाहिए था,
अब BC है हमारे पास, BC। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने यहाँ पे लिखा था फर्स्ट स्टेटमेंट, AB and BC are equal, so we can write 9AB square is equal to 9AD square. In the place of BC we can write AB also, just write BC is equal to AB. नाउ ये 2AB यहाँ पे प्लस है, दूसरे साइड जाएगा, 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर। ठीक, एंड देन 9 में से 2 गया, बचा 7, सो वी कैन राइट 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर। प्रूव हो चुका है, प्रूव। ओके, गॉट इट। टेक स्क्रीनशॉट। अंडरस्टूड एवरीवन? जस्ट थंब तो दिखाओ। ओके, करूँ मैं दूसरा लू आगे वाला? हाँ। वाह वाह वाह, बहुत है रे, इतना लेंदी कोई लेक्चर देखेगा क्या? आर्या 17 वाला थोड़ा बाद में लेते हैं। हाँ। विल ट्राई, कितने सम से पहले मेरे को देखने दे, यानी उसका। ओके 30। Say two circle touches each other at point C. Prove that the common tangent to the circle bisect the common tangent at PQ. आर्या already we solved this one, मुझे लगता है, बट चलो ठीक है, मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझ में आएगा। Okay. So this is one circle, this is the another circle, these both touches each other, दोनों ने एक दूसरे को टच किया है एट पॉइंट सी। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा, दिस इज पॉइंट सी। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट सर्कल एट पॉइंट सी, कॉमन टेंजेंट है कोई तो, सो फ्रॉम हियर वन कॉमन टेंजेंट, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी क्यू। तो दूसरी एक कॉमन टेंजेंट है, दिस इज वन मोर कॉमन टेंजेंट, दिस इज एट पी क्यू एंड दिस बाइसेक्ट। तो क्या दिया? प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। सो यू हैव टू प्रूव कि पी क्यू जो टेंजेंट है ना, वो बाइसेक्ट होती हुई करना है, मीन्स यू हैव टू प्रूव पी डी इज इक्वल टू क्यू डी। ओके, प्रूफ। प्रूफ क्या होगा? फर्स्ट, पी डी इज इक्वल टू डी सी। PD is equal to DC. The reason tangent from exterior point to circle are equal. Correct. Then QD is equal to DC. Again, this is for the another circle ना, ये दूसरे सर्कल के लिए, ये फर्स्ट सर्कल के लिए था। This is for the first circle, this is for the second circle. Reason क्या था? Tangents drawn from exterior point to circle are equal. So if you observe carefully, first and second में DC, right hand side is same. So therefore PD is equal to QD from first and second. और hence proof हो गया, proof. Okay. Take the screenshot. Taken. Okay. Next. ये जा क्यों नहीं रहा है?
Okay, the question, figure 4 square ABCD inscribe in a quadrant OPBQ quadrant है मीन्स सर्कल का 1/4 पार्ट है OA that is a radius sorry side of square that is 15 find the area of shaded region ठीक है so now see how to solve this question ये क्वेश्चन बस आप ना एक्सप्लेन कर दो, बाकी का सॉल्व मैं कर दूंगी। ओके मतलब तो अभी इसमें क्या है ना दिस OABC this one is a square means each and every side that is 15 okay but the radius of this quadrant is not given ये OQ नहीं है तो if we joined O and B को joined किया that one is the radius of this quadrant and that is a diagonal of square तो स्क्वायर का डायगोनल अगर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग दिस इज सपोज द स्क्वायर दिस इज ऑफ 15 15 15 एंड 15 एंड दिस वन इज ओ बी ना अभी हम लोग ने सपोज ज्वाइन किया ओ एंड दिस इज बी दिस इज ए एंड दिस इज सी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज पाइथागोरस थ्योरम आर्या एंड फाइंड ओ बी ओके 101% वो आएगा 15√2 so this 15√2 that one is a radius got it अब वो रेडियस आ गया क्वाड्रेंट का अभी हमें क्या करना है शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर एंड एरिया दिस वन इज अ साइड स्क्वायर जस्ट पुट अप द वैल्यू एंड सॉल्व अंडरस्टूड यस ठीक है टेक स्क्रीनशॉट टेकन। नेक्स्ट पावर पावर एकदम मैराथन कर लिया रे हम लोग ने आज This question, the rod AC of a TV disc antenna is fixed at a right angle to the wall AB. AB को fix किया है उसने. Okay, means here this one is a right angle. And the rod seat support to the disc. ये figure में दिया है AC, that one is a 1.5 meter long. And CD, this one is a 3 meter. फाइंड tan क्या है वो अरे दिख नहीं रहा है मेरे को tan क्या है फाइंड tan थीटा हाँ tan थीटा और फिर sec थीटा प्लस cosec थीटा। so tan theta is equal to opposite upon adjacent तो adjacent की वैल्यू नहीं है then we have to use Pythagoras theorem ना so Pythagoras theorem यूज करेंगे इन ट्रायंगल DAC पता चल जाएगा ना with the help of Pythagoras theorem you have to find AD and then whatever the answer मे भी पॉइंट में आएगा चलो चेक करते हैं बिकॉज वो आंसर इतना सीधा नहीं आने वाला CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस तो दिस वन इज अ 3 स्क्वायर AD नॉट गिवन AD स्क्वायर एंड AC दैट इज 1.5 स्क्वायर सो 3 का स्क्वायर 9 है AD को AD रखते हैं एंड 1.5 मीन्स यू नो दैट इज अ 3/2 ना so 9 is equal to AD square that is a 9/4 शिफ्ट करते 9/4 को 9 minus 9/4 is equal to AD square तो 4 गया यहाँ पे 36 minus 9 upon 4 AD square okay so this become 27/4 that is AD square so now AD square is equal to we know that 27 means 9 into 3 अपॉन 4 उसमें से 9 एंड 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो AD क्या आएगा 3√3/2 टेकिंग स्क्वायर रूट कैसे आया ये 9 का स्क्वायर रूट 3 है 4 का स्क्वायर रूट 2 है और √3 का 3 है तो AD की वैल्यू आ गई
नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस आप कर सकते हो जैसे अभी किया tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज AC और एडजेसेंट साइड AD. तो AC is 1.5 and AD is 3 root 3 by 2. So we can write 1.5 into 2 upon 3 root 3. LCM करेंगे. This is 1 जा, this is 2 जा. 2 cancel. So you have 1 by root 3. Okay. Same you have to find another also. आ जाएगा. Take the screenshot then. आएगा ना. हाँ ठीक. Okay. Take the screenshot. AD find out करना है. डिफिकल्ट वहां तक आ गया तो बाकी सब आ गया. काय केलं अंगात ते चेक तर हाँ नाही तुला नाही इकडे सरांना बोलवतोय. ते अब कहाँ रह गया. जस्ट अ मिनट. डिलीटिंग ऑल दिस. बहुत सारे वर्ड क्या ओपन किया मेरे को ही नहीं. धृति आर यू देयर. धृति भाग्यश्री. द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर. अभी ये पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करने हैं हमें ना. दिस वन इज द. सो दिस इज x square minus 3x. Just open the bracket. We can open the bracket minus m square minus 3m is equal to 0. Okay. So this and this we have to multiply. Okay. So इसे multiply किया तो answer is okay. Just don't do this one. X square minus 3x minus m and m plus 3. So this and this we have to multiply. तो ये हो जाएगा minus m and m plus 3 and the x square is there, then minus m square minus 3m. इसके फैक्टर 3 आनी चाहिए. 3 the factor should be 3. तो एक फैक्टर आएगा m and the another factor is m plus 3. अब कैसे करेंगे इसको. if this one is a the another factor should be minus 3. माइनस 3x आना चाहिए. मैं इसे प्लस करता हूँ और इसे माइनस करता हूँ. देखो चेक करो. m माइनस 3 माइनस m माइनस 3 माइनस 3. तो दिस कैंसल. आंसर इज माइनस 3. तो हमें क्या करना है. फैक्टर्स लेने हैं. माइनस m माइनस 3 इज 1. या तो इसको प्लस लो और इसे माइनस साइन दो एंड दिस शुड बी प्लस. सो हमारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस mx माइनस m plus 3x and then minus m plus 3. So this is the middle term. This one is the middle term. So अगर इसका एक ग्रुप बना और इसका एक ग्रुप बना. So the bracket x plus m minus this bracket is same. देखो m plus 3. तो m plus 3. अनदर ब्रैकेट में क्या आएगा. माइनस साइन है तो अंदर की साइन चेंज x एंड प्लस m. नाउ दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट सेम ना. तो राइट है तो इसको एक ब्रैकेट में लिखो. x plus m in one bracket and outside x minus m plus 3 in another bracket is equal to 0. तो x plus m is equal to 0 और x minus m plus 3 is equal to 0. तो x is equal to minus m और x is equal to पूरा ब्रैकेट है m plus 3. तो सेकेंड वन B is the answer.
गॉट इट? Yes. ऐसा क्वेश्चन ना बड़े 3 मार्क्स के लिए भी कोई पूछ सकता है, तो टेक द स्क्रीनशॉट, पता होना चाहिए कैसे सॉल्व किया। 1 2 3 शूट। Find the area of the shaded region in figure 8 if PQ is equal to 24 and PR is equal to 7. So O is the center. Now, आर्या, हम लोग अभी थोड़ा शॉर्टकट में जाते हैं. We know one, this is a right angle triangle. So this one is a 24 PQ. PQ is 24 already given, and this one is a 7 and 100, and ये कितना आएगा 25 आएगा with the help of Pythagoras theorem. So in triangle RPQ, this PQ is equal to 24, PR is equal to 7. So therefore RQ, that is 25 centimeter, but you have to show by Pythagoras theorem. आपको Pythagoras theorem यूज करके करना है. Then find क्या बोला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. कैसे करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल. नाउ दिस RQ, that one is a diameter, तो रेडियस क्या आएगा 25/2 ऑफ सर्कल. ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेमी सर्कल लेना है. सेमी सर्कल, टेक दिस सेमी सर्कल. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of semicircle minus area of triangle RPQ. तो शेडेड सेमी सर्कल का फॉर्मूला है हाफ पाई आर स्क्वायर, एंड दिस वन इज अ हाफ. नाउ वी नो दैट RQ इज अ हाइपोटेनस, तो क्या आएगा into PR into PQ. Just put up the value and solve, you will get the answer. Understood, Arya? हाँ. Okay, take the screenshot. ठीक है. Next. See the midpoint of the line segment joining A. This is 3 4, and B, that one is a K6. The midpoint is P, that is XY, and the relation of and x plus y is equal to -10 is equal to 0. Find the value of K. Then we have to use midpoint formula. क्या होता है, x is equal to x1 plus x2 divided by 2, and then y is equal to y1 plus y2 divided by 2. So x is x only, x1 is 3, this become k, and this become 2. अब ना यहाँ पे कुछ ज्यादा करने की हमें जरूरत है क्या, चेक करते हैं. y is equal to y, y1 is equal to 4 plus 6 upon 2. That one is a 10/2. It become 5. ठीक है. Now we have one relation. क्या रिलेशन था, इसको पहले करना चाहिए था हमें. x plus y minus 10 is equal to 0. ठीक है, ये रिलेशन है. इसमें वैल्यू पुटअप करो. x की वैल्यू क्या है 3 plus k/2. y की वैल्यू क्या है 5 minus 10 is equal to 0. तो 3 plus k divided by 2, minus 10 plus 5, minus 5 is equal to 0. Shift 5 that side. 3 plus k divided by 2, 5 goes that side, become plus. 2 को shift करो, that become multiply. 10, k is equal to 10 minus 3, answer is 7. Okay, take screenshot.
ठीक है। एंड फ्यू मोर, कितने बाकी है? इतने डाउट्स थे? नक्की? हाँ। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन कोई बचा है। नहीं है, हाँ, वो हो गया। 17 वाला। हाँ, एक तो बचा है ना। 17 वाला बाकी है, पण ते तुम्ही बोलले ना, ते तुम्ही क्लासमध्ये शिकवा. नाही, थांब ना, दोन दोन मिनिटं बघू ना. Prove that the area of equilateral triangle described on one side of a square is equal to half of the equilateral. हाँ ठीक है, इसको ना मैं 9 में इसको बाद में लेता हूँ. ओके, सो ऑलमोस्ट वट एवर द सम्स आप लोगों ने किए सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे. जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन और सॉल्व करो एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज. जितने भी एमसीक्यू भी आर्यन एक एमसीक्यू आया था वो भी थोड़ा इतना इजी नहीं था, तो डू इट. ओके.